Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Okay, we will start the section formula on straight line. And what is section formula and what are the types of section formula we will discuss here. First, section formula माने कौन एटार प्रकार केतेटा अछि. First देखिबा internal division. What is the internal division means? First, I will denote it in my diagram. प्रथमे जदि देखिबा इंटरनल डिविजन माने कौन. इंटरनल डिविजन एठी we have a line AB. हम पाखरे गोटे लाइन अछि AB. If the point is P lie on the line AB, means P is a point on the line AB. That means P point टा AB line उपरे अछि. जदि AB line रे अछि तो A और B को किछ गोटे भाग रे विभक्त करूथबो. That means एठू A रु P जते भाग होइथिबो P रु B जते भाग होइथिबो किंबा A रु P जते भाग होइथिबो B रु P ताठू अधिक होइथिबो किंबा A रु P बड़ होइथिबो आ B रु P छोट होइथिबो. ए टाइप किछ गोटे भाग रे होथबो. So we are representing here if A to P is M and B to P is N. That means जदि A ठारू P रो दूरता M भाग हुए आउ B to P रो दूरता जदि N भाग हुए, that means giving example, if A रू P मनकर 2 cm, B रू P मनकर बा P रू B मनकर 5 cm. So एमानको भितर रेशियो केते आसीबो AP divided by BP, that equal to what? 2 by 5 cm. That is our ratio. So AP by BP is 2 by 5. So P point टा AP ला A और B line को केते रेशियो रे डिवाइड करूची 2:5 रेशियो रे डिवाइड करूची. आउ जदी वर्तमान आमे कहिबा A रो कोऑर्डिनेट जदी किछि अछि x1 y1, B रो कोऑर्डिनेट जदी अछि किछि x2 y2, then what is the coordinate of P? The coordinate of P is given by this mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 minus ny1 divided by m minus n. So this is the x component, means eta corresponding x value dabo, and this is the y component. So eta kon dabo y value dabo. So वर्तमान एठु बुझी पाले जदि हमें गोटे पॉइंट P अछि AB लाइन उपरे, से P पॉइंट AB लाइन को किछि रेशियो रे डिवाइड करथबो. एठी AB रो लेंथ केते टोटल 7 cm, because A to P 2 cm, P to B 5 cm. So total length 7 cm. आ से ता केते रेशियो रे डिवाइड करछि 2:5. ता माने एठु एति केते हिथिबो A to P 2 cm हिथिबो, P to B 5 cm हिथिबो. ताहाले A रो जदि किछि कोऑर्डिनेट थिबो x1 y1 आ B रो x2 y2, these all are real number. x1 y1 x2 y2 जदि रियल नंबर थिबो तो आमे P रो कोऑर्डिनेट केमति बाहर कर परिबा. Using this formula we can find out the value of P. So it is eta देखिबा. So here I have written, if the coordinate of A equal to x1 y1 and coordinate of B equal to x2 y2, we always remind one thing, that the coordinate of x2 y2 is opposite in the direction of m. M ro sarvada opposite direction re kaun thibo x2 y2 thibo. Here we can see m is on the side of AP, किंतु x2 y2 टा कार कोऑर्डिनेट B रो कोऑर्डिनेट, which is in the opposite direction of m. Similarly n रो opposite direction रे कोन थिबो x1 y1. We should remind that thing. आ एठी P पॉइंट टा जदी a line को किछि m:n रेशियो रे डिवाइड करे तो ताहार कोऑर्डिनेट केते हबो mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So I have written the same thing here. If the coordinate of a point dividing the line segment joining the point A x1 y1 and B x2 y2 internally, जेहेतु एटा P point कोन AB line रो
भितर रही कि डिवाइड करूची सो एटा को हमें कौन कहबा इंटरनली डिवीजन because here the point P lies internally so this will be the point P एठी हमें क्वेश्चन ओडे सॉल्व करिवा here I have given find out the point which divides the line segment joining A equal to what 1 comma minus 3 and B equal to minus 3 comma 9 internally in the ratio 1:3 1 और 3 ratio रे divide करूची तो here we can see the picture in this picture A is represented as 1 comma minus 3 that means x1 equal to 1 y1 equal to minus 3 B is equal to minus 3 comma 9 which are given so it x2 होची minus 3 y2 होची 9 we have given it divides the point line internally in a ratio of 1:3 so m टा हला 1 n टा हला 3 so वर्तमान हमें से ए सब जाको नहीं कि ए इट मींस फार्मूला रे पुट करबा तो हमर आराम से पड़ी आसीबो p रो पॉइंट मींस सॉरी c पॉइंट तो m जगह रे पकेबा 1 x2 equal to minus 3 plus n x1 n होची मोरो 3 x1 होची मोरो 1 divided by m plus n that means 1 plus 3 comma my2 plus ny1 divided by m plus n m is my 1 y2 is 9 plus ny1 1 into minus 3 into minus 3 divided by 1 plus 3 solving this what we are getting 0 comma 0 so ए जो पॉइंट अच्छी 1 minus 3 और ए पॉइंट B minus 3 comma 9 को जो C internally divide करूची जदि 1:3 ratio रे so the coordinate of C will be 0 comma 0 next देखिवा midpoint formula माने कौन midpoint means हमें जानी पाछो जे मझिरे थिबा पॉइंट ता माने कौन मझिरे थिबार अछि मींस से इंटरनल ही रहिबो that means जदि गोटे line you can see here the figure if AB is a line and here the same C divides the line internally in a ratio of what 1:1 कौन पाई जेहेतु मझिरे जदि गोटे पॉइंट रहइबो मन करो A to B रो दूरता होची 4 cm let this is 4 cm तो मझिरे रहिबो ता माने कोन 8 एति की 2 cm 8 एति की 2 cm so जदि हमें रेशियो नबा AP divided by BP तो कोन हो 2/2 that equal to 1/1 so एठी कोन हो m आउ n रो वैल्यू समान हो आउ जोटा का से तो समान हो m आउ n रो जदि रेशियो नबा ता मान AP by BP रो रेशियो नले 1:1 आसीबो so जदि P गोटे पॉइंट which lies in the midpoint of AB then the coordinate of P is so same formula pakeba mx2 plus nx1 divided by m plus n here m and n both have the value 1 so I have put here 1 similarly here my2 plus ny1 divided by m plus n so 1 y2 plus 1 into y1 divided by 1 plus 1 so what we are getting x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 okay first we will do one example so that we can clear what is the concept so first देखो एठी देछि कोन find out the midpoint of the line segment joining -4,8 B 12,6 so dita point देछि कोन कोन first A होछि -4,8 and B equal to 12,6 so this is my x1 this is my y1 this is my x2 and this is my y2 एठी कोन कहला मिड पॉइंट जेतु कहला ता माने कोन रेशियो 1:1 रे डिवाइड करछि ऑब्वियस एंड वी हैव द फार्मूला व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला जदि दीटा पॉइंट रो मिड पॉइंट हिथिबो तार केमदि बाहरिबो एवरेज ऑफ sum of xi values average of sum of yi values that means x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 so एठी हमें कोन देखि परिबा x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2
एठी हमर x1 और y1 रो वैल्यू आसिला -4 + 12 divided by 2 comma 8 + 6 divided by 2. So we have the value 8 by 2 equal to 4 and 14 by 2 equal to 7. So this is all about midpoint formula. So this is all about internal division. माने गोटे पॉइंट जदि लाइन रो मझिरे रही कि बा लाइन ऊपर रही कि लाइन को डिवाइड करे तो तार कौन कौन हे परिबो पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट आमे देखिले जो इंटरनली रहिले तार फार्मूला तापर तार स्पेशल केस मिड पॉइंट फार्मूला. वर्तमान देखिबा भितरे तो रही कि डिवाइड करूची आमे देखिबा बाहर रही कि मध्य केमिति डिवाइड कर परिबो एंड दैट इज आवर एक्सटर्नल डिविजन. External division. First, I will show from the diagram what is this concept. जदि गोटे पॉइंट लाइन अच्छी A B जार A पॉइंट होची x1 y1 and B पॉइंट होची x2 y2 and P is the point which lie on the extended line of AB. ता माने AB लाइन को जदि आमे आगु को बढ़ेबा तो ताहार से लाइन रो किछि जे दूर रे थिबो P जदि थिबो तो ए दीटा A और B रो जदि कोऑर्डिनेट हमकु जणा थिबो how we can determine the point P. that is the concept here. हेले जेहेतु ए प्रकार देछि एठी P पॉइंट ए लाइन को AP आउ BP रो किछि रेशियो रहिबो and that is AP divided by BP equal to M is to N. ता माने A to P जदि M भाग हुए आउ B to P जदि N भाग हुए तो आमानु कोन बाहर करिवार अछि P रो कोऑर्डिनेट बाहर करिवार अछि. and again describing the concept here more clearly. एठी कोन हेतिबो मन करो A रु B मन करो लाइन होची 5 सेंटीमीटर A रु P मन करो होची ए टोटल लाइन मन करो A रु P 15 सेंटीमीटर तो B रु P कोन हेतिबो 10 सेंटीमीटर हेतिबो. तो मोर रेशियो जदि मु बाहर करिबी AP divided by BP तो मोर कोन आसीबो 15 divided by 10 that means 3 divided by 2. so एटा होची से M आउ N जोड़ा कि का सहित समान 3:2. so ए पॉइंट P टा ए AB लाइन को एक्सटर्नली को रेशियो रे डिवाइड करछि 3:2. सिमिलरली एठी हमें जो देखिले एठी किछि न्यूमेरिकल वैल्यू नै कि देखिले तो वर्तमान जदि जनरलाइज करबा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P सेटा देखिबा. सो P रो कोऑर्डिनेट कोन हबो mx2 minus nx1 divided by m minus n my2 minus ny1 divided by m minus n. This will give the x coordinate and this will give the y value. So this is the formula. Next we will see what is here, means by example we will solve. Okay, I have given find the coordinate of the point P which divide the line joining A -2,3 to B 4,7 externally in a ratio 5:2. ता माने कोन होची A और B पॉइंट रो कोऑर्डिनेट दला -2 3 आ गोटे होची 4 7. ए P पॉइंट एक्सटर्नली रही कि ता माने ए B रो एक्सटेंडेड लाइन रे P किछ गोटे जगह अछि केमिति जगह अछि A to P 5 भाग जदि हुए तो B to P केते भाग हबो 2 भाग हबो. ता माने जदि मु गोटे कहिबी ए टोटल लाइन टा 5 सेंटीमीटर हुए तो एठु होची एटा होची 5 सेंटीमीटर आ एटा होची 2 सेंटीमीटर सेते बेले ही हबो AP आ BP रो रेशियो 5/2. तो एठी हमर देखिबा M टा केते 5 N टा होची 2. This is my M and this is my N. So वर्तमान फार्मूला रे पकेबा this is my x1 this is my y1 this is my x2 this is my y2. So एटा फार्मूला रे पकेले कोन होची mx2 minus nx1 divided by m minus n. M equal to 5 x2 is my 4 minus n equal to 2 x1 equal to -2 divided by m minus n that equal to 5 minus 2 comma
my2 minus ny1. M equal to 5, y2 equal to 7 minus n into y1, that equal to 2 into 3 divided by 5 minus 2. By solving, what we are getting? 24 by 3, 29 by 3. This is the coordinate of C. This is all about external division. That means ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲି ରହିକି କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ରହିକି କିଛି ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରେ ତ ସେ ପଏଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? Giving comparison for all the three, if P point divides the line AB internally, by internally, lying internally in a ratio of m:n, then this is the coordinate of P. If P is the midpoint of AB, that means A to P equal to B to P. So this is the midpoint formula, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. And if P is the point lying external, means extended line of AB, and dividing the line AB in a ratio, then the coordinate of P will be mx2 minus nx1 divided by m minus n, comma my2 minus ny1 divided by m minus n. Thank you.